Assalamu alaikum students. As we have discussed before, the process of gastrulation, that the formation of trilaminar disc. We have discussed the day 1, day 2 of fertilization, and up to the third week we have discussed that there is the formation of gastrulation, gastrula formation, trilaminar disc is formed, ecto, meso and endoderm is formed. Now we move towards the process of organogenesis, the formation of organs and system during the embryonic development is called organogenesis. So, in case of MCQ, they have asked that कि आपके पास ये जो फर्स्ट मेजर इवेंट ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है वो क्या है, दैट इज न्यूरुलेशन. The first major event in organogenesis is neurulation, the differentiation of ectoderm that produce the brain and the spinal cord. Neurulation is actually the differentiation of ectoderm that is producing the brain and the spinal cord. Now, in case of humans, by the end of embryonic period, when the embryo is 22 millimeters, slightly less than 1 inch long from head to buttocks, referred to as crown rump measurement, all the adult organ systems are recognizable. So at the embryonic stage, आपके पास थर्ड वीक के बाद फीचर्स जो है वो रिकग्नाइज हो सकता है, इसके ऑर्गन्स रिकग्नाइज किए जा सकते हैं. That is truly called the organogenesis, which occur in a short period of time, such a small amount of living matter. ठीक हो गया. अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की. ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आपको थोड़ी सी इसकी रिविजन हो जाए. नाउ at day first of fertilization there is 2 pronuclei. Okay, then we have the cleavage blastomeres. ठीक है, then we have the process of compaction, then we have the process of differentiation, then there is cavitation, then there is zona pellucida hatching. ठीक है, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को, राइट. Implantation in the uterine epithelium, then there is the formation of bilaminar disc, there is the formation of 2 layers, then the 2 layers, there is the formation of primitive streak, then आपके पास जो है हम amniotic sac visible हो जाएगी, yolk sac visible होगी, mesoderm, then we have the trophoectoderm. And then in this diagram you have seen that this is the embryo proper, this is the umbilical cord, this is the chorionic villi, and we have the digestive tract, and we have the embryo as well. Okay, if you want to memorize from this diagram then it would be easy for you. ठीक हो गया. फिर इसके बाद आप आ जाएं न्यूरुलेशन के प्रोसेस की तरफ. अब हम अगर न्यूरुलेशन के प्रोसेस को ले लें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके पास न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन द ह्यूमन एम्ब्रियो द प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन कब स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बिगिंस. ठीक है, the nervous system develops from the middle ectoderm located just above the notochord. So ये जो notochord से जो ऊपर मिडल साइड में आपके पास ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म की जो लेयर है इससे क्या बनती है, इससे न्यूरल प्लेट बनती है, इससे नर्वस सिस्टम बनता है. वी आर सेइंग कि ये आपके पास ये जो नोटोकॉर्ड है ये मेसोडर्म से डिराइव हुआ है, और नोटोकॉर्ड से जो ऊपर एक्टोडर्म की लेयर है इसे हम कह रहे हैं कि ये वो लेयर है जिससे नर्वस सिस्टम बनेगा. द डेवलपिंग नोटोकॉर्ड induces the overlying ectoderm to thicken. तो ये जो आपके पास ये जो नोटोकॉर्ड है ये क्या करेगी, ये इंड्यूस करेगी कि आपका ये जो एक्टोडर्म है ये थिक हो जाए, फॉर्मिंग अ न्यूरल प्लेट. ठीक है, तो ये आपके पास ये नोटोकॉर्ड की खासियत है
नोटोकॉर्ड के पास कुछ ऐसे केमिकल सिग्नल्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो एक्टोडर्म है ये थिकन हो जाता है. The process is induced by chemical signals from the notochord, the rod of mesoderm that defines the body axis. Okay, so there is a special type of chemicals which is released by the notochord, which will make the ectoderm thicken and will form a neural plate, which will later form the nervous system. Okay, now the central cells of the neural plate move downward. Now the central cell, these cells of the neural plate, they move downward, as you can see in this diagram, and form a depression called neural groove. So this is the depression which is called the neural groove. Then neural fold develop on either side of neural groove. So the fold is developing at the sides. This is called the neural fold. Okay. Acha, by 22 day, the continued cell movement begin the superior margins of the folds closer together until they meet and fuse together to form a neural tube. सही हो गया. अब आप इस नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इतने फोल्ड होंगे कि ये दोनों पार्ट्स, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये पर्पल कलर के पार्ट्स, ये आपस में मिल जाएंगे, और ये जो ग्रीन पार्ट है इसने न्यूरल क्रस्ट सेल्स बना दिया है. न्यूरल क्रस्ट सेल्स फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक हो गया. तो न्यूरल क्रस्ट सेल से हमारे पास किसके कंपोनेंट्स बनेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स बनेंगे. देन इन दिस इमेज वी कैन सी दैट वी हैव द एपिडर्मिस. Okay, this blue system then develops into the proper epidermis. Then we have the neural tube. Then we have the crust cells which are developing into the spinal ganglion, and we have the notochord. And these sides which are derived from the mesoderm, they are called the somites. It soon pinches off and become covered by the surface of the ectoderm. At this point, the brain, the tube develops into the spinal cord. तो ये फिर आपके पास ये जो न्यूरल ट्यूब है ये किस में चेंज हो जाएगी? ये स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाएगी. So the formation of neural crust cells. So why the neural crust cells are formed? What is the role of neural crust cells? Various motor nerves grow out of the developing brain and spinal cord. मोटर नर्व्स, आपको तो पता है ना, हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि नर्व्स जो हैं निकलती हैं डेवलपिंग ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, बट सेंसरी नर्व्स have a separate origin. The neural crust which is developed in the region of neural plate border. ठीक हो गया. After neural tube closure, यानी आपके पास ये जो न्यूरल ट्यूब की क्लोजर जब हो जाएगी, द एसोसिएटेड न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट वाइडली टू द लेटरल साइड्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब, यानी साइड्स पे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. And give rise to the cranial, spinal and sympathetic ganglia and associated nerves. Neural crust cells migrate to various parts of the embryo, forming the peripheral nervous system, medulla of the adrenal gland, ठीक हो गया, teeth, skull bones and so many other different cell types that some have proposed that neural crust cells is the fourth germ layer. तो यहाँ पर न्यूरल क्रस्ट सेल जो है वो हमारे बॉडी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, पेरिफेरल नर्व्स बनाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड का मेड्यूलरी रीजन बनाएंगे. तो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया कि न्यूरल क्रस्ट सेल जो है ये थर्ड जर्मिनल लेयर है. No, not third, it is fourth actually. Number one, ecto, meso, endo. Number fourth is neural crust cell or neural crust layer. This third germinal layer. Okay. The growth is most obvious phase of development, which is characterized by the increase in size and mass. So the embryo is increasing in size, increasing, it is being growing, and the process of neurulation takes place, and there is the formation of neural groove first, then neural tube, and then neural proper canal that will result in the formation of green type of layer, that is neural crust cells, and these crust cells then form the spinal ganglion. ठीक हो गया. अच्छा,
Now we came to the topic of human embryonic development. Human embryonic development. Okay. Now, the human embryonic development, what do you mean by human embryonic development? As we know that the embryo is developing day by day, and we have studied the mechanism from blastula, from the zygote, हमने यानी जाइगोट से लेकर और हमने कहाँ तक पढ़ी उसकी डेवलपमेंट, न्यूरोलेशन तक, ऑर्गेनोजेनेसिस तक. अब हम स्टडी करेंगे कि आपके पास ह्यूमंस के केस में नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो कब तक लास्ट रहती है, कब तक रहती है. Embryonic development begins with fertilization. Okay, the embryonic development begins with fertilization. After fertilization, zygote undergoes changes which lead the formation of fetus and then to an adult. Okay, fertilization of an egg by a sperm normally occur in the proximal part of the oviduct. So, as the zygote passes down the oviduct, it undergoes cleavage, which leads to the formation of blastocyst. Pregnancy is usually established when blastocyst is implanted into the endometrium. We have discussed it in the detail in the previous topics. Okay. If the implantation is successful, the embryo begins to secrete human chorionic gonadotrophin HCG hormone. So the implantation occur, the embryo will secrete the HCG hormones and tells the ovary to release more and more progesterone for the healthy pregnancy. So this type of hormone is predicted, मतलब टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट. So the urine, in the urine test, HCG levels, if they are high, it means that the sign is positive, the female is conceived, the female has been conceived. ठीक है, तो अब इसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा. द ह्यूमन गेस्टेशन, GESTATION period, the duration of pregnancy averages 280 days. So the gestation period in human female is 280 days from the time of mother's last menstrual period to the birth of baby, or 266 days, that is 9 months. Okay, human pregnancy can be divided into 3 trimesters. 3 months, ठीक है, 3 months, 3 trimesters में, try means 3. The first trimester is from the last menstrual period, last menstrual period, जिसको डॉक्टर्स LMP कहते हैं, to the 13th week. The second trimester is from 14th to 27th week. The third trimester is from 28th week to 36th week. Okay, this is not written in your book, you have to mark it, you have to write it. The first trimester, I am repeating, is from 13th week. ठीक हो गया, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 13 वीक तक. फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 से 27 वीक तक. फिर लास्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 28 से 36 वीक्स तक. ठीक हो गया. अब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास ये जो इम्प्लांटेशन हुई, और इम्प्लांटेशन के बाद अब आपके पास एक प्रॉपर डेवलपमेंट होगी लेयर्स की, एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स की डेवलपमेंट होगी. नाउ व्हाट इज दैट डेवलपमेंट, और वो कैसे होगी, इसमें हम स्टडी करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, soon after the fertilization that zygote travels down, ये I have discussed it, and आपको पता है कि आपके पास ये जो zygote है ये कैसे ट्रेवल करेगा, और यूट्रस में जाएगा, वहाँ इम्प्लांटेशन होगी, और फिर उसके बाद जब हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया वीक 1 to 12. ओके, वीक 1 to 12. नाउ
The first the fifth week of pregnancy marks the beginning of embryonic period. This is when baby's brain, spinal cord, heart, and other organs are formed. This is organogenesis actually. Okay, the embryo is now made of three layers. The top layer is ectoderm, which will give rise to the outermost skin, central and peripheral nervous system. So इससे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। इस आप ये जो पैराग्राफ है इसको बहुत गौर से पढ़ें, ठीक है। ग्रोथ इज रैपिड इन द कमिंग वीक, न्यूरल ट्यूब along with the fetal back is closing and the heart is pumping the blood, the basic facial features will begin to appear, ठीक है। अब ये वो वाली ग्रोथ है जो कि हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है। सी शेप कर्वेचर बना लेगा फीटस, स्मॉल बर्ड्स अपेयर होंगी, आर्म्स एंड लेग्स के लिए नॉस्ट्रल्स अपेयर होना स्टार्ट होंगे, आईज के लेंसेज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आर्म्स की बर्ड्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक हो गया। पेडल्स की शेप, जिस तरह हम कहते हैं ना पेडल्स, द आर्म्स एंड लेग्स आर ग्रोइंग लॉन्गर एंड द फिंगर्स हैव बिगन टू फॉर्म। नाउ व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। प्रेगनेंसी इन विच द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन एनी अदर साइड ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस में ना हो, इसको फिर हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। सच ट्यूबल प्रेगनेंसी इज अनएबल टू एस्टेब्लिश अ प्लेसेंटा और अकोमोडेट, यानी फिर प्लेसेंटा नहीं बना पाएगी और फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर। द यूट्राइन ट्यूब रप्चर्स अनलेस द कंडीशन इज डायग्नोस्ड, और मतलब ये होगा कि इससे ये इम्कानात हैं कि आपके पास ये जो फिलोपियन ट्यूब है ये रप्चर कर जाए, तो इस वजह से बेहतर है कि पहले ही कंसल्ट कर लिया जाए। ये हम अभी फर्स्ट में ही हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं। द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बेबीज ईयर्स आर ऑल्सो फॉर्मिंग। अब ये सारी फिंगर नेल्स और ये सारे के सारे फेस का जो प्रोफाइल है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है फर्स्ट मंथ में। आप मुझे बताएं फर्स्ट मंथ में कितने वीक्स होंगे? 4 होंगे, तो इसका मतलब ये है कि 4 वीक तक ये सारी की सारी चेंजेस आई हुई होंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लें कि आपके पास दिस इज दी overview of the umbilical cord, umbilical artery, vein, maternal blood in the intervillous spaces, uterus, this is placenta, amniotic fluid, yolk sac and placenta. Okay, this diagram is showing the amnion, amniotic cavity, chorionic villi, uterine arteries and veins. हमें कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो पार्शली मदर की सर्कुलेशन से बना होता है और पार्शियली फीटस से बना होता है, ठीक है, फीटस की सर्कुलेशन से बना होता है। फीटस अपनी तरफ से कोरियोनिक विलाय से अटैच होगा और मदर अपनी तरफ से यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होगी, ठीक है, तो दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से नेचर ने दोनों को इतने क्लोज कांटेक्ट में, मदर एंड फीटस दोनों को क्लोज कांटेक्ट में रखा है, ठीक है। So what happened during the second trimester? During the second trimester, the fetal sex become apparent and possibly identified. तो क्या होगा कि second trimester, कौन सा trimester, second trimester में कौन सा week आता है आपके पास? Second trimester में हमारे पास आ जाता है 14 से लेके 27th week तक, ठीक हो गया। The 4-month-old fetus look quite human-like. Okay, it will become like an human. Halfway through the 4th month, the fetus can bring the hand together and suck the thumb. ठीक हो गया. Many of the bones are forming by replacing the cartilage. The sensory organs are almost completed, developed, and by the 16th week, the fetus is actively turning inside the mother. मतलब घूमना स्टार्ट कर देता है मदर बॉडी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में. The mother may feel movement during the early part of the second trimester. So, mother खुद feel करती है movement baby की. By the end of 5th month, the heartbeat of the fetus can be heard through the stethoscope. Okay. At the end of the 6th month, the head is no longer quite as larger compared with the rest of the body. The eyelids have separated and the lashes have been formed. So, such an amazing development inside the body of the mother. Fetus development in the 3rd trimester, the final weight gain takes place, which is the most मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा वेट गेन जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में होता है मदर का, क्योंकि बेबी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है. द 4th fetus will be growing
The fetus will be growing the most rapidly during this stage, gaining up to the 28 grams per day. The fetus begins to move regularly and is felt by the woman. The movement of fetus becomes stronger and more frequent. Improved brain, eye, and muscle functions. The fetus is prepared for the ex utero viability. There is head engagement in the third trimester. Fetus head descent into the pelvic cavity. और अगर ये pelvic cavity की तरफ ना आए तो कॉम्प्लिकेशन होती है, और अक्सर सी सेक्शन का कहा जाता है, सिजेरियन का ऑपरेशन का कहा जाता है, अगर बेबी जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में पेल्विक रीजन की तरफ उसका हेड ना जाए. ओके, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. 40 weeks into pregnancy or 38 weeks after conception, baby might be about 18 to 20 inches long and weight is 6 to 9 pounds. However, the healthy born baby is in different sizes. It's just as normal to deliver a baby in week or too late or earlier. It is मतलब ये होता है कि ड्यू डेट से आगे या पीछे हो सकता है. ठीक हो गया, पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, लेकिन ना बहुत ज्यादा मतलब इतना 9 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. ओके. ट्विंस और क्वाड्रुपलेट्स. क्वाड्रुपलेट्स का मतलब ये होता है प्रेगनेंसी ऑफ 2 और मोर फीटसेस. तो फिर हम कहते हैं ट्विंस और मल्टीपल फीटस. मल्टीपल फीटस कैन बी सेम, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और फेटर्नल भी हो सकते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस और ट्रिपलेट्स के कम फ्रॉम अ सिंगल एग दैट हैज बीन फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म. ठीक हो गया. तो ये हो सकता है कि एक सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, लेकिन फिर वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया 2 एम्ब्रियोज में ड्यूरिंग द फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज. फेटर्नल मल्टीपल्स कम फ्रॉम द मल्टीपल फर्टिलाइज एग. अब अगर एग ज्यादा एग रिलीज हो गए और फर्टिलाइज हो गए. सम आइडेंटिकल मल्टीपल्स शेयर द सेम प्लेसेंटा. बाजूकात ये होता है कि एक ही प्लेसेंटा में रहते हैं, और बाजूकात ये भी हो सकता है कि 2 प्लेसेंटास बन जाए. However, they usually grow within the separate amniotic sac, but उनका amniotic sac जो है वो different होगा. In rare cases, what is amniotic sac? देखिए, हमने वो जो स्काई ब्लू कलर का वो बैग सा देखा था ना, वो बलून सा जिसमें बेबी था, इस एमनियोटिक सैक उसको कह रहे हैं. ठीक है. आई होप कि अब तक तो आपको एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्लियर हो चुकी होंगी. फिर भी उतनी ज़्यादा मैं आपको डायग्राम्स अब जाहिर है कि आपने अब समझ लिया है, कॉन्सेप्ट हो गया है, तो दैट इज़ जस्ट रीडिंग. ठीक है. और फिर भी इसके बाद अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझसे क्वेश्चन कर ले, लेकिन बहुत ईजी है. ओके. प्लेसेंटेशन. Now what is placentation? हम बार बार पढ़ रहे हैं. The process of formation of placenta. Some cells of the embryo grow into a disc-like structure called placenta. Okay, the placenta is the organ that provides nutrients and oxygen to the embryo and helps dispose of its metabolic waste formed of the embryo's chorion and mother's endometrial blood vessel. Okay, write it down. What I am saying, write it down. Okay.